आज का क्या टॉपिक था हम लोग का? किसी को याद है आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? यस मैम, बताओ कौन सा? पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच। यस मैम, आप पीपीटी शेयर करने वाले थे, आपने करी नहीं। कम्युनिकेशन वाली? यस मैम। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को। तो आज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर शेयर कर देना। हाँ हो जाएगी ना आज? मैं कर दूंगी। ओके मैम। तो आप लोग को कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया ना? यस मैम। ओके। What do you know by communication? Communication is the activity or the process of expressing ideas and feelings to pupil, information and instruction. Yes ma'am. Yes, right. 1 minute, someone is waiting to be let in. I am making him let in. Okay ma'am. That's why I'm asking you people, no, that you should join till 7:55. Yes ma'am. Okay, so now I'm going to share my screen. So today's topic is about what is speech. Wait 1 minute, where is the topic? Everyone can able to see my screen, right? Yes ma'am. Yeah. Okay, what is speech? What do you know about speech? What do you know about speech? Speech is a conversation between one and two persons. हाँ, स्पीच मतलब बोलने की शक्ति को क्या बोलते हैं? स्पीच। ओके, अब और जैसे कि स्पीच मीन्स होता है ए फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीच। बोलने की शक्ति को क्या बोलते हैं? एबिलिटी को स्पीच। आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो, ठीक है? Yes ma'am. Okay, what do you know about speech? You guys can hear me? Yes, ma'am. हाँ, tell me what I told you now about speech. बोलने की शक्ति। Ability. हाँ, ability. The ability to speak is known as speech. Okay. In simple definition of speech, I am telling what is that. The communication or expression of thoughts, spoken words, exchange of spoken words, conversation, something that is spoken. Okay. So today what all topics we will cover? Let's see. Understand the topic briefly. You will going to understand the topic briefly. Then some set of rules to be followed and daily life example. क्या rule follow होता है और daily life पे examples. Okay. Then exercise to be given after each topic. I will provide you questions after each topic that you have to solve it. Okay. And every Friday टेस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आज से जितने भी टॉपिक्स चालू होंगे ना, वो एवरी फ्राइडे को आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है? Okay ma'am. Okay ma'am. Okay, ma'am. Okay. Every Friday what I am going to do?
ठीक है, first understanding the topic briefly, then some set of rules to be followed and daily life examples, then exercise to be given after each topic, then every Friday test to measure the level of अंडरस्टैंडिंग कितना आप लोग को समझ आया है वो डेली फ्राइडे को चेक किया जाएगा एंड व्हाट ऑल द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है क्या क्या कंटेंट्स हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच in small words I am telling you what is part of speech one of the groups that words are divided into for example noun verbs or adjective these all are in Hindi these all are known as संज्ञा क्रिया विशेषण आदि ठीक है I am telling there are 8 parts of speech in the English language that I am telling you guys be attentive okay first one is noun then pronoun verb adjectives adverb preposition conjunction and interjection okay क्या क्या है वो 8 पार्ट जो स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज के Yes, ma'am. क्या क्या है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के Noun, pronoun, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction, interjection, summary. not summary okay Not these summary. interjections Yes, ma'am. okay the part of speech indicates the how the word function in meaning as well as grammatical with the sentence now why it is important why part of speech is important anyone have this answer because the part of speech indicates how the word function in meaning as well as grammatical within the sentence an individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances sentences are made up of words therefore it must be carefully a different kind of words and it is important to understand that every word in sentence has a job to do a role in the sentence why it is important because to understand that every word in a sentence okay Yes, has ma'am. a job to do in a role in sentence classification of part of speech what is that you people know No, ma'am. that the now only I told you noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction and interjection and in this part of speech now there are two type of classes first one is I am opening my notepad wait a minute then I will tell you why this notepad is not working from you anybody is logged in from laptop or everybody No, has ma'am. logged in from mobile only Mobile, ma'am. Mobile. okay no issue okay I am telling you you guys can write it okay this is the important part my notepad is not opening here so that's why I am telling you you people are writing can I say Yes, ma'am. Yes, ma'am. see there are two part of speech then divide this into two parts first one is open classes second one is closed classes okay in open classes Okay. in open classes Rauda,
productive, noun, productive, noun, adjective, verb. Over. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Now, there only after productive, then again you give second column, then write non-productive, then adverb. Over. Yes, ma'am. Okay. Now in closed classes you write down. First one is pronoun. Over. Yes, ma'am. Numeral. 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 Yes, ma'am. Then interjection. Then there only second side you write down. Grammatical instrument. Grammatical instruments. Article. Preposition. Conjunction. Over. मैम क्लोज क्लासेस में 2 पॉइंट्स हैं. In closed classes, first one is pronoun, then No. second one is numeral, third one is interjection, and at second part grammatical instruments, then articles, then preposition, then conjunction. ओपन Again, क्लास का भी एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, ओपन क्लासेस का फर्स्ट साइड में है पहला प्रोडक्टिव, देन सेकंड नाउन, then third adjective, then verb. At second side there is a non-productive, then adverb. Okay. आगे Yes, की ma'am. क्लास में इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे. और सब एक बार अपना स्नैप मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, जैसा आप लोग लिखे हो. प्लीज शेयर द Okay. स्नैप टू मी. Okay, ma'am. ओके. Yeah, correct. You can understand, right, that is open class. In open class there is a 2 section, then in class means in closed class there is a 2 section. You can understand, right? Avi, Yes, ma'am. you can also understand, right, there is a 2 section. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes. See, part of speech. Part of speech can be defined as words that perform different roles in a sentence. Part of speech क्या define करता है? हर एक word में अपना जो role है वो अलग प्ले करता है. जितने भी sentences हो गए, जितने भी words हो गए, सब में अपना वो role जो है वो अलग role play करता है. ठीक है? Part of speech can be defined as words that perform different roles in a sentences. ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या डिफाइन करता है? जितने भी वर्ड्स हैं वो हर वर्ड्स को डिफरेंट रोल में सेंटेंस को परफॉर्म करता है. राइट? अभी मैं जितने बार भी वर्ड्स बोली हूँ सब अलग अलग डिफरेंट वे में बोली हूँ ना, सेंटेंसेस और वर्ड्स के साथ. हेलो.
Yes, ma'am. Okay. What do you know by part of speech? Tell me, everyone, one by one. What do you know by part of speech? मैम यही पढ़ के बताना है. आप क्या समझे वो भी बता सकते हो. ओके मैम. मैम यही चीज है कि जो सेंटेंस के मतलब इट्स द सोल ऑफ सेंटेंसेस. हाँ. पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ये डिफाइन करता है कि वर्ड्स जो वो परफॉर्म करता है वो अलग रोल में परफॉर्म करता है सेंटेंसेस के साथ. जितने भी वर्ड्स और सेंटेंसेस है वो हर एक बात को डिफरेंट रोल में प्रेजेंट करता है. ठीक है. यस मैम. नाउ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ पर्टिकुलर क्लास such as noun. Now we had learned about this, right? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection, right? यस मैम. मैम. Yes, ma'am. हेलो हाँ बोलो. मैम. ये जो साइड में क्लोज कर दीजिए ना, जो क्रिएट आर्ट ऑफ फ्रॉम वर्ड आई आई आ रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए. पूरा पिक्चर खोल दो, ओपन हो जाएगा. हाँ, दैट्स इट. Okay. See, part of speech is a particular class of words in a sentence, such as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. It played different function in a sentence based on their position. There was a 8 part of speech in English languages. How many speech are there in English languages? 8. Yeah, 8. Okay. For example, you can see this one. For example, Mr. Sarovar likes hot coffee in breakfast. Okay. As first, notice this example and try to understand the parts of speeches and how you should classify them into sentences. देखो, Mr. Sarovar क्या हुआ? Mr. Sarovar क्या हुआ? नाउन मैम. Noun. नाउन हुआ. नाउन क्या, ये नाउन में क्यों आया? किसी को कोई आइडिया कि ये नाउन में क्यों आया है? यस मैम, बिकॉज नेम है मैम वो. हाँ. नाउन इसकी बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है. हाँ, क्योंकि नाउन जो है, नाउन क्या प्रेजेंट करता है? नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस और थिंग. तो सरोवर क्या हो गया? एक पर्सन हो गया, राइट? तो मिस्टर सरोवर किस में आया? नाउन. नाउन. ठीक है. लाइक वर्ब में आया. ये क्यों आया? कोई आइडिया? बिकॉज ये लाइक सिर्फ एक लाइक आया है वर्ब में. क्यों आया? क्योंकि वर्ब क्या प्रेजेंट करता है? वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन को और ऑक्यूरेंस को और स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है. ये एक्शन रिप्रेजेंट करता है, ऑक्यूरेंस रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ बीइंग. इसलिए लाइक किस में आया? वर्ब में. Okay. Now hot came into adjective. Why it came into adjective? Because it modify a noun और pronoun. ये क्या modify कर रहा है? या तो noun को modify कर रहा है या तो pronoun को modify कर रहा है. ये आपको बस एक example के लिए बताऊंगी और मैं जो बता रही हूँ वो note down कर लीजिए, क्योंकि आगे का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा और मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन के बारे में पूछूंगी कि ये नाउन में क्यों आया, वर्ब में क्यों आया, एडजेक्टिव में क्यों आया. ठीक है. और नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, देन अगेन नाउन, प्रीपोजिशन, देन अगेन नाउन, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, ये सब की मीनिंग के बारे में. जैसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा बताइए, राइट? नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है? पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस और थिंग्स. देन वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन, ऑक्यूरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. देन एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई करता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन? नेम, थिंग एंड प्लेस मैम. Yeah, person, concept, place or thing. Then in came in preposition. Why it came in preposition? It used to show the relationship between the
डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है? ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। देन अगेन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट केम इनटू नाउन अगेन बिकॉज वाई नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट, ठीक है। yes ma'am. मैम ये ब्रेकफास्ट कौन किस में आएगा, थिंग्स में आएगा? हाँ, ब्रेकफास्ट थिंग्स में ही आएगा, या तो कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, या कॉन्सेप्ट में आएगा या तो थिंग्स में आएगा, ओके। ठीक है। देन someone read this paragraph again. Part of speech, someone read this Parts of paragraph. speech is parts of speech is a particular class of word in a sentence, such as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. It plays different functions in a sentence based on their position. There are 8 parts of speech in English language. For example, Mr. Server likes hot coffee in breakfast. Okay, till here is anybody having any doubt till here? Any doubt? So that I have to No, ma'am. explain it again. No, ma'am. No, ma'am. Nobody is having any doubt? No अगर ma'am. कोई भी डाउट है तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? Okay. Part of speech can be defined as a word that perform different roles in a sentence. एंड और बहुत कुछ बताया मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और क्या क्या है? It's a language of 8, ma'am. English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection, ma'am. ओके, Yes, ma'am. why is part of speech important in our daily life? The Life. part of speeches are important because they show us how the word relate to each other. क्या पार्ट ऑफ स्पीच, इसलिए मैं अभी इसके बारे में भी बताई थी, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच? देखो, द पार्ट ऑफ स्पीच आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे शो अस हाउ द वर्ड रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स take the word him, Kevin and Brian. Now they are just word. They don't really tell us something. ये केविन कुछ बताएगा आप लोग को कि ये क्या है? No, ma'am. ये ब्रियन से कुछ पता चल रहा है ये क्या है? No. बस इस ये तीन के बारे में आप लोग क्या समझ पाए कि सिर्फ ये एक नाम है या ये एक पर्सन है, राइट? Yes. इससे और कुछ नहीं समझ पाए हैं हम लोग, है ना? Yes, ma'am. Now they are just words. They don't really tell us something. Here it's written also. They are not. They are just a word. They don't really tell us something. Read it. This one. The part of speech to which a word belongs. Anyone? The can part read? of speech to which a word belongs guides its use in a sentence and defines the correct word, order, and punctuation. Knowing the role that each word has in a sentence structure clearly helps to understand sentences and also to construct them properly. Yeah. See, the part of speech to which a word belongs guides its use in a sentence and defines the correct word, order, and punctuation. Knowing the role that each word has in a sentence structure clearly helps to understand sentence and also to construct them properly. तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ड क्या बिलोंग करता है कि वो हमें एक सेंटेंस के लिए गाइड कर रहा है, करेक्ट वर्ड बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, पंक्चुएशन बता रहा है। हम लोग को पता है क्या कि हम लोग ये जब यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है या वहाँ पे जो कॉमा लगे हुए वो हम लोग को पता है कि हम लोग को कब कैसे लगाना है, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, राइट? Yes, ma'am.
बट हम बस हमको इतना पता है कि एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, है ना? यस मैम। इसके यस मैम। आगे और कुछ नहीं पता है। Yes, एक और कुछ पता है और कुछ नहीं पता है ना अपन को तो। यस मैं अपन का कुछ नहीं पता। हाँ, the part of speech to which a word belongs guides, ये हमें तो यही है, पार्ट ऑफ स्पीच हमें गाइड करता है सेंटेंस और वर्ड में, डिफाइंस करता है करेक्ट वर्ड को कि कहाँ ऑर्डर और पंक्चुएशन का भी यूज किया जाता है। Knowing the role that each word has in a sentence structure clearly help us to understand sentence and construct them properly. ये क्या हेल्प करेगा हम लोग को कि हम लोग का जो सेंटेंस है वो क्लियरली बन जाए, राइट? यस मैम। Okay. Part of speech are important in English grammar because they help learner to know how to use a word correctly in a sentence. अभी आप लोग भी यहाँ पे इसीलिए हो, राइट, कि आप लोग भी एक वर्ड को अच्छे से यूज कर पाओ, करेक्टली सेंटेंस बना पाओ। यस मैम। यस मैम। See, 3 reasons are listed here. First one, you can't make or understand sentence without them. Without part of speech, you people can't make any sentences. Okay. Then second one, it helps you master writing techniques. It will, if you will be doing good and if you will be doing a hard work, it helps you master writing techniques. It will make you master writing techniques. Then it makes writing and life easier also. Someone Yes, ma'am. read this all this topic. Someone read. Who had read already? That person don't read it. Till now, those who are not read, that person read it. Yes, ma'am. Why is part of speech important in our daily life? The part of speech are important because they show us how the words, ma'am, that लिखनी है, how the words जूम कर लो भाई, उसे जूम कर लो, जूम कर लो। ठीक है, how the words are related to each other. For example, let's take the words heat, Kelvin, and brain. Now, they are just words. They don't really tell us something. The part of speech to which a word belongs guides its use in a sentences and find the correct word, order and punctuation. Knowing the role that each word has in a sentence structure clearly helps to understand sentences and also construct them properly. Part of speech are important in English grammar because they helps learners to know how to use a word correctly in a sentence. Okay. Reason also read it, Abhi. Oh, 3 reasons. 1. You can't make or understand sentences without them. 2. It helps to master writing techniques. 3. It makes writing and life easier. Yeah, correct. Nice, Abhi. But don't stop in between, huh? If you are learning, learn it when there is a full stop, there only you stop. For Okay, 1 okay, ma'am. second to 2 seconds, then else you can continue it, okay? Okay, ma'am. Stop in between. Okay, Okay. after Avik, who is going to read this paragraph? मैम मैं अभी चल रहा हूँ, पढ़ नहीं पाऊंगा। हेलो। ठीक है। और आपके अलावा कोई और है तो वो कर सकता है। Can I, ma'am? हाँ, yeah, you can. The part of speech are important because they show us how the words relate to each other. For example, let's take the words hit, Kevin, and Brian. Now they are just words, they don't really tell us something. The part of speech to which a word belongs guides its use in a
sentence and defines the correct word, order, and punctuation. Knowing the role that each word has in a sentence structure clearly helps to understand sentences and also to construct them properly. Part of speech are important to English grammar because they help learners to know how to use a word correctly in a sentence. Three reasons. You can't make or understand sentences without them. It helps you master writing techniques. It makes writing and life easier. Yeah. Okay. So what do people understand about this? कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में, क्योंकि हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो वो मेक सेंस करे दूसरे को, प्रॉपर देखो पोजीशन पे जो भी बोले वो प्रॉपर पोजीशन पे वर्ड हो. देखो what I am going to tell now about this topic, it is not written here. I am telling you about this word about myself. So be careful, be attentive, because if I can ask, you have to give the answer, right? I am telling you. See, there are thousands of rules in the English languages, right? We also know there are thousands of rules are there in our English languages, okay? Yes, In ma'am. order to be excellent writers, we need to understand this rule and follow them when we write. So we have to learn this all the rules. ठीक है, we learned that na noun, pronoun, adjective, preposition, interjection, and all. We in this also so many sections are divided. Okay, so we have to cover this all. It will take time to cover it. Okay. Okay. However, there is no ओके. need to memorize all these rules. Our brains just are not capable of that. Okay, our brains are not that much capable that we can cover all this, but little bit we have to cover it. ठीक है. Yes, ma'am. And also part of speech describe the job a word does in a sentences. ठीक है. part of speech क्या describe करता है? The job a word does in a sentence. Okay, मैम रिपीट करना. part of speech describe the job a word does in a sentence. And see, sentences are made up of word. Sentence किससे बना हुआ है? ये दे एक Words से. सेंटेंस बना हुआ है, राइट? ये किससे बना है? सेंटेंस किससे बना है? Words. करेक्ट. Words. सेंटेंस किससे बने हुए? वर्ड से. Words, ma'am. या. See, it is important to recognize and identify the different types of words in English so that we can understand grammar and we can use the right word form in the right place. ठीक है, अगर हम लोग ग्रामर को अच्छे से समझते हैं ना, राइट वर्ड में हम लोग राइट प्लेस में वो चीज सेंटेंस बना पाएंगे. जैसे यहीं पे बना हुआ है ना, मिस्टर सरोवर लाइक हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट. अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ, तो आप लोग मुझे बता पाएंगे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है. आप लोग बता पाओगे मेरे को? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे, फिर ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना. ठीक है. How many parts of English languages are there? 8. 8. Correct. What are they? What are they? Noun, pronoun, verbs, adjective, Noun, preposition, conjunction, interjection. Suhas, close your mic. Sorry. See, part of speech identified by the
place they have in the sentence, not by their meanings. We have to identify by the sentences, okay, not by their meanings. We have to identify. Whatever we are going to identify, we have to identify by the sentences, not by the meanings. ठीक है. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग से. What part of speech in the word? Anyone have any idea? What? Repeat. What part of speech? मैम क्वेश्चन क्या है? What part of speech? यस मैम. ठीक है. What part of speech in the word double inverted comma open, Okay. then it closed? What